Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, now the example of oxygen related species that arrange the following species in decreasing order of their stability or on the basis of reactivity. This question is asked in the board examination also, in the competition also. So the species are O2, O2 plus, O2 minus, O2, 2 minus. The question is, arrange the following species in decreasing order of their stability or on the basis of reactivity. Species are O2, O2 plus, O2 minus and O2, 2 minus. Okay students, now we have to calculate the bond order of these species, and on the basis of bond order we can determine the stability, because we know if bond order is high then stability also high. And what is the relationship between stability and reactivity? Both are inversely proportional to each other. Stability is inversely proportional to reactivity. Stability inversely proportional to reactivity. If stability is high, then reactivity is less. Okay students, now we check the bond order of a O2 molecule. Then in last lecture we determine the bond order of O2 molecule is 2. Okay students, in case of O2 plus ion, O2 plus ion, there are two species. One is ऑक्सीजन एंड अदर इज O प्लस. ऑक्सीजन दो हैं लेकिन प्लस एक ही एड मीन्स O एंड O प्लस आयन. ओके स्टूडेंट्स, O मीन्स न्यूट्रल ऑक्सीजन and O plus means the oxygen having less electron. Now we fill the electronic configuration. The electronic configuration of a neutral oxygen is 1s2, 2s2, 2p4, and here plus charge is present on oxygen atom. So what happen? One electron is removed, so only 2 electron in the 2p orbital. Now we fill the electron in amors after combining the avos. So first 2 plus 2 electron, 4 हो गए यहाँ पे, 2 plus 2 electron, 4 electrons, but here 4 plus 3 electron, total electrons are 7. We start filling the electron from sigma 2pz, that is 2 electron, and then third, fourth, fifth, sixth. Total electrons are 7. So 1 electron goes to sigma star 2pz. Why? Because if we fill 1 electron in pi 2px, then the system becomes unstable. Why? Because the energy of pi star 2px and pi star 2py same. तो यदि हमने एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया तो दूसरा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. हमारे पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, so this electron goes to sigma star 2pz. Okay, so this is the MO diagram of which molecule? O2 plus. यहाँ पे रनिंग टॉपिक चल रहा है O2 plus का MO diagram. Now the electronic configuration, sigma 1s2 and sigma star 1s2. So we'll write sigma 1s2 and sigma star 1s2. Then sigma 2s2 and sigma star 2s2, sigma 2s2 and sigma star 2s2. Then sigma 2pz2, sigma 2pz2 and pi 2pxy, pi 2px2 and pi 2py2, pi 2px2 and pi 2py2. We know that the energy of pi 2px and pi 2p orbital, pi 2py orbital are same. So we'll write almost equal sign between the pi orbitals and then comma. Pi star 2px में कुछ भी नहीं है, pi star 2py also 0.
and the electron is present in sigma star 2pz, so we'll write sigma star 2pz. So students, this is the MO diagram of O2 plus ion. Now we calculate bond order with the formula of bond order: number of bonding electrons minus number of anti-bonding electron divided by 2. So very first we determine the number of bonding electron in case of this MO diagram. So total electrons in BMOs are 2 electron in sigma 1s, then 2 electron in sigma 2s, and 6 electron in sigma 2pz and pi 2px, pi 2py. Total electron becomes 10. So total 10 electrons are here. Minus anti-bonding electron. So we'll calculate anti-bonding electron. Here 1 electron in sigma star 2pz, then 2 electron sigma star 2s, then 2 electron sigma star 1s. So total electrons 2 plus 2 plus 1, total 5 electrons. So 10 minus 5 divided by 2 equal to 5 by 2 equal to 2.5. Okay, students? The bond order of O2 plus ion is 2.5 because 10 electrons are of bonding, 5 electrons are of anti-bonding. 10 minus 5 divided by 2 equal to 5 by 2 equal to 2.5. Now the turn of magnetic properties. Magnetic properties of O2 molecule. So we'll check on the basis of unpaired or paired electrons present in molecular orbitals of O2 plus ion. So check that is any unpaired electron is present in molecular orbital? Yes. 1 electron is present in sigma star 2pz. Here 1 electron in sigma star 2pz is unpaired, and we know that if unpaired electrons are present, then substance is known as paramagnetic. Okay, students? So we'll write unpaired electron is present, only one. Unpaired electron is present, so the substance is known as paramagnetic. Okay? Substance is known as paramagnetic, and what is the meaning of paramagnetic substance? It is weakly attracted by magnetic field. So we'll write weakly attracted. Okay, students? तो ये रही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो इसलिए हमने लिखा वीकली अट्रैक्टेड, पैरामैग्नेटिक नेचर, एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5. तो हमने O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया है और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2.5. नाउ वी चेक द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 minus on the basis of molecular orbital theory. So what is meant by O2 minus ion? O2 minus means there are 2 oxygen atom but minus 1 charge present on 1 oxygen atom. So 2 oxygen and 1 O minus and 1 O neutral. So the molecular orbital theory of O2 minus. O2 minus made up of 1 oxygen and 1 O minus. Okay, students? 1 oxygen means it is the normal neutral oxygen having the configuration 1s2, 2s2 and 2p4. But in case of O minus ion, there is negative charge present. It means 1 more electron is present. 1 more electron is present. So the 1 electron goes to 2p. It means 5 electrons are present in 2p subshell. So students, यहाँ पे O में न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ओरिजिनल ऑक्सीजन है, बट हियर ऑक्सीजन इज इन आयनिक फॉर्म हैविंग 1 more electron. So we'll put 1 more electron normally in 2p. 4 electrons are present. We'll fill 1 more electron, that becomes 2p5. Okay, students? तो अब चेंज क्या आएगा? 1s और 1s fulfilled, 2s 2s 2 plus 2 4 fulfilled, but in 2p of oxygen 4 electron and 2p of O minus 5 electron, 5 plus 4 9 electrons. So we fill
9 electron in the molecular orbitals of 2p. तो यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. 1 2 3 4 5 6 electrons are there, and then 3 remaining electrons right now. We have filled 6 electron. Now remaining electrons are 3. Okay, so we fill 1 electron, then 1 electron. Is pairing occurs? No, because if we put 1 electron here, then 1 paired orbital and 1 unpaired orbital will be there, which is unstable in nature because the energy of these orbitals are same. Okay, so 1 electron and 1 more electron. तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? This electron goes to sigma star 2pz, because here pairing not occurs because the energy of pi orbitals are same. Okay, students, now the O2 molecule is ready. Now we see the electronic configuration of O2 molecule. Electronic configuration of O2 minus. Electronic configuration of O2 minus will be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. यहाँ तक सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें. आगे क्या चेंज आ रहा है ये भी सेम है. सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px एंड पाई 2py2, पाई 2px एंड पाई 2py2, एंड देन हियर pi 2px, pi 2py and sigma star 2pz, or all orbitals having 1 electron each. So we will write the full configuration. Pi star 2px, 1 electron almost equal to pi star 2py, 1 electron, comma, sigma star 2pz, 1 electron. Okay, students? तो हमने देखा अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 माइनस स्पीसीज. नाउ कम ऑन द टॉपिक बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 or more than 2 atoms. Nb minus Na divided by 2. This is the formula to calculate bond order. We'll count bonding electron first. सबसे पहले हम काउंट करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है देखते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन. कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 10. सो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. नाउ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम चेक करेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो 3 + 2 5 and 2 7. सो 10 - 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5. Bond order of O2 minus is 1.5. Okay, students, bond order of O2 minus is 1.5. Now the next point is magnetic properties. Magnetic properties हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं. क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? हम देखेंगे एमओज के बेस पे. Yes, 3 unpaired electrons are present in the anti-bonding of 2p. Okay, students, तो 3 unpaired electron है, means unpaired electron present है. Unpaired electron present, so paramagnetic in nature and weakly attracted from magnetic field. Okay, so the bond order of this species, that is O2 minus, is 1.5. हम इसको नोट कर लेते हैं. किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1.5. आइए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज O2 2 माइनस. O2 2 माइनस मीन्स 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर और माइनस का चार्ज भी यहाँ पे कितना है? 2. 2 ऑक्सीजन और दोनों के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. सो वी कैन राइट O माइनस और O माइनस 2. दोनों ही तरह से आप एमओ बना सकते हैं. O माइनस से, या एक आप ऑक्सीजन ले लीजिए, एक आप O-2 ले लेंगे. मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन.
Okay students, so O minus व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या है, ये एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, यहाँ पे O2 माइनस में एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है एक्स्ट्रा। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो O2 2 माइनस यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स देर आर 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज आ रहा है, यहाँ पे टोटल -2 आ रहा है, तो एक पे कितना आएगा -1, तो एक ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पे -1 है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन -1 और ऑक्सीजन -1 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका एमओ डायग्राम। O minus means 1s2 2s2 and one more electron, so it becomes 2p5, and other O minus means यहाँ भी 2p में क्या हो जाएंगे 5, so 1s2 2s2 2p5। ओके, अब क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 1s एंड 2s का पैटर्न वही रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स fulfilled MOs, 2 electrons fulfilled MOs, and in 2p there are 5 electrons in each O minus, so total electron become 10, total 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं BMO तक। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? 2 इलेक्ट्रॉन and 2 electron and 2 electron, 2 plus 2 plus 2 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। Now 7th 8th 9 and 10, now pairing occurs or not? Definitely occurs. Why? Because if we fill one electron, then we are having 2 more electrons remaining, and we know that energy of these 2 orbitals are same, so we can pair। हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो भी इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया, पेयरिंग यहाँ पे हुई कि नहीं हुई? डेफिनेटली हो चुकी है। सो इट इज द एमओ डायग्राम ऑफ O2 2 minus। Okay students, now what is the change in electronic configuration? Here the no electron in sigma star 2pz, no electron in sigma star 2pz, 2 electrons in 2px2 and 2 electrons in 2py2 of anti-bonding। तो पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 2 minus। Okay students, now the turn of bond order. What is meant by bond order? Bond order means number of bonding electron minus number of anti-bonding electron divided by 2. So what happened? Here we count the bonding electron, that are 10, 2 plus 6, 6, 7, 8, 9, 10. Total electrons are 10. Okay students, now anti-bonding electron. Now calculate anti-bonding electron. Here 4 electron plus 2 electron plus 2 electron. Anti-bonding means स्टार वाले इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए ये 4 plus 2 plus 2, कितने हो गए 6 and 7 8। So total electrons are 8 in case of anti-bonding। ABMO में total electron 8 है, 4 plus 2 plus 2। तो हमने पुट कर दी वैल्यू 8, then 10 minus 8 divided by 2 equal to 2 by 2 and 1। So bond order of O2 2 minus will be 1। Okay students, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है 2 plus 2 plus 6 10, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है 4 plus 2 plus 2 8। So the 10 minus 8 divided by 2, 2 upon 2 equal to 1। So it is the bond order of O2 2 minus। Now the turn of magnetic property, is there any single electron present in MOs of O2 2 minus? No, all electrons are paired। You can see clearly। क्या यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड। all electrons are paired, and we know if paired electrons are present, then what happen? If paired electrons are present, then substance is known as diamagnetic in nature, and if substance is diamagnetic, then it is weakly repelled from the applied magnetic field। Weakly repelled from
applied magnetic field because all electrons are paired in the MOs of O2 2 minus. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर मिला है 1, जिसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे. दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 minus. And now come on the question. क्या था क्वेश्चन? The question is, arrange the following species in decreasing order of the stability, and we know very well that if bond order is high, then species is high stable in nature. यदि bond order high है तो species definitely कैसी रहेगी? High stable रहेगी नेचर में. तो यहाँ पे आप बता सकते हो कौन सी species ज़्यादा stable है. Bond order is O2 plus is 2.5, so the stability order in decreasing order is O2 plus, then O2, then O2 minus, because the bond order is 1.5, then O2 2 minus. It is the stability order, decreasing order of stability. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? O2 plus. Why? Because the bond order is 2.5 and the reactivity order will be reverse of it. क्यों होगा रिवर्स? क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो इसको रिवर्स कर देंगे. सो O2 2 minus, then O2 minus, then O2, then O2 plus. It is the reactivity order. तो हम किसी भी स्पीसीज को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इस तरह से कर सकते हैं अरेंज. तो हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ O2, O2 plus, O2 minus and O2 2 minus. Thank you so much.